Second of exercise 1.1 of the linear equation in two variables. Now we'll continue this lecture and we will take the example number 3 of this exercise. In this example, 2x minus 3y is equal to 9. It is equation first, and 2x plus y is equal to 13 is equation second. Now boys, you have to see that this the coefficient of this y is 3 and coefficient of y is 1. That's why we have to compare these coefficients and we have to equal it. Then how to equal it? We have to multiply equation second by 3. Then we will write here equation second multiply equation second multiply multiply equation second by 3. Then what will be it now? We have to multiply equation second by 3, therefore 3 into equation second, and we have to multiply both sides of this equation. It is, yesterday I have told you that it is LHS and it is RHS. That's why we have to multiply by 3 both the sides of this equation. Now we will multiply it. That is 3 into 2, that is 6x plus 3 into 1, that is 3y is equal to 3 into 13, that is 39. Now we have get the equation third, new equation. We will give the name it equation third. Now we have to solve equation first and the equation second. Now see here, the coefficients of the variable y and variable y are the same, and the signs of these two equations are opposite, that is plus and minus. Here is a minus, here is a plus. At that time we have to add these two equations. Therefore I will write here adding equations first and third. Adding equation first and third. We have to add it by, for this step we have to write one by one. 2x minus 3y is equal to 9 and 6x plus 3y is equal to 39. We have to add it. Now see here, 2x plus 6x, that is equal to 8x, and minus 3y and plus 3y get cancelled, is equal to 9 plus 9, 18, carry on 1, and 3 plus 1 is 4. Now we have to calculate the value of x at that time. We will see here it is a variable and it is a coefficient, and in between them there is a sign of multiplication. Therefore x is equal to 48 divided by 8. Now 8 6 are 48, x is equal to 8 1 are 8 and 8 6 are 48. Therefore x is equal to 6. It is the value of x, and you have a practice that by putting the value of x in equation first, second or third, you will get the value of y. Now I will put this value in equation second. Therefore here write, put the value of x. Put the value of x in equation second. On your choice, you will put the value of x in equation first, second or third as your choice. Then I am putting the value of x in equation second. Therefore I will write here equation second here, 2x plus y is equal to 13. It is equation second, and the value of x is 6. Here
here it is a coefficient and it is a variable. In between them there is a sign of multiplication. Therefore, this is 2 into value of x is 6 here and plus y is equal to 30. Now 2 into 6, 2 6 are 12. Here 12 plus 1 is equal to 30. And this 12 goes to RHS. At that time it becomes minus. If it is plus, it becomes minus. If it is minus, it will be plus. If it is divided by, then multiply. And if here is multiply, then divided by. These are the four steps. Now 12 is a plus. Therefore 12 become here minus. Therefore y is equal to 30 minus 12. Now y is equal to 30 minus 12 is equal to 1. Right. Now here it is a 1. And we will write the last answer. If you will not write the last answer in the answer paper of the board, you will cancel your mark, half mark or 1 mark, as in the modulus. Now you will write here x, the value of x is 6 and comma, the value of y is 1. Therefore 6 comma 1 is the solution of given equation. In this way, the example number 3 is completed now, and we will continue. If there is some problem, you can see this problem after one by one. और आपको कोई दिक्कत हो, बॉयज और गर्ल्स, आपको कोई अगर दिक्कत है समझने में, तो इस वीडियो को बार बार देखें. जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक ये बार बार देखें. Now we will continue the next example of the exercise 1.1. You will write the example first. You have to understand the example. Take notebook, take pen and book and practice it now. And we will continue the fourth example, that is phi m minus 3n. Phi m minus 3n is equal to 90, comma. The next equation is m minus 6n. m minus 6n is equal to minus 7. It is equation number 4. And we have to solve the equation number 4. I suppose that you have write the example. After completing this example, we will continue the next example, that is fourth example of this exercise 1.1 of the linear equation in two variables. Boys and girls, this equation is very simple. After observing this equation, here there is a sign minus and minus. If boys and girls, if there is a plus and plus, you have to subtract equation first from second or second from first. And if there is a sign of minus and minus, same way you have to subtract equation first from second or second from first. And if there is a plus and minus, at that time you have to add these equation 1 and 2. These are the conditions here. You have to remember this now. In the example 4th number, example, here is a sign of minus and minus. Then you have to subtract the equation first from second in this thing. But before this, you have to compare these two equations and the coefficients of m or n, which you have to eliminate this. Now here is a 3 and here is a 6. You have to fill that
We can multiply the equation first. It is equation first, it is equation second. You can multiply equation first by 2. Correct? Now here you have to multiply equation first by 2. Then we will write here multiply equation first by 2. Boys and girls, by multiplying equation first by 2, what will be the new equation? 2 into 5, that is 10m, minus here 2 into 3, that is 6m, is equal to 19 into 2, that is 38. We got the new equation, and the number of new equation is here is first, second, and number of new equation is 3. Now we have to calculate the equation second and equation third. There is minus and minus, that's why we have to subtract the equation first, this equation second from equation third. Now we will write one by one. Here 10m minus 6m is equal to 38, and the equation second is m minus 6n is equal to minus 7. When we write the subtraction or subtract equation first from second, the signs of the next equation, that is second equation, will be changed. Here is a sign of plus, at that time it becomes minus. Here is a sign minus, at that time it becomes plus. Here is the sign minus, at that time it becomes plus. In this way now. Now 10m minus 1m. If there is no coefficient, there is one coefficient. Therefore 10 minus 1, that is 9m, and minus 6m and plus 6m get cancelled. Now is equal to now 38 minus 7, that is equal to here 38 plus 7, it becomes 45, and here is a sign of multiply. Therefore m is equal to 45 by 9. Now we will get the value of m, that is 9 ones are 9, 9 5s are 45. Therefore m is equal to 5. The value of we got the value of m. For the calculating the value of n, we have to put the value of m in equation second, first, or third. Then we will write put the value of m in equation second. Put the value of m in equation second. Then we will write the equation second, that is m is equal m minus 6n is equal to minus 7. It is equation number 2 or a second. The value of m is 5. Then I will write here 5 minus 6n is equal to minus 7. Now see here, this plus 5 will become here minus 5. Therefore minus 6n is equal to minus 7 minus 5, and minus 6n is equal to, if there is a minus and minus, then we will the sum of these, we will get the sum 7 plus 5, that is 12, and the sign of minus here. Both sign minus will get cancelled, and n, the value of n will be 12 divided by 6. Therefore 6 ones are 6 and 6 twos are 12. That is n is equal to 2 now. Then we got these two values, that is m and n.
these values m and n satisfies both the equation. Therefore, the 5 and 2 is the solution of the equation. Therefore, 5 comma 2 is the solution of the equation. It is the example number 4. You will write, and we will continue the 5th example, that is 5x. We will continue the 5th example now. 5x plus 2y. 5x plus 2y is equal to minus 3, comma, x plus 5y. X plus 5y is equal to 4. It is a 5th example of the exercise 1.1. Now, I suppose that you have written the example number 4, and we will continue now example number 5. In this example, you can observe the coefficients of x and coefficients of y. Are they same? No. Then you will multiply the equation first and equation second by simple method. The coefficient of y here is 2. You have to multiply equation second by 2. And coefficient of y here is 5, and you will multiply equation first by 5. एक सिंपल सी बात है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो इससे मल्टीप्लाई करें और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करें. बहुत सिंपल सी बात है. देन वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट. मल्टीप्लाई equation first by 5 and equation second by 2 in this way. By multiplying this equation, so we will get the new equation. We have to multiply first equation by 5. 5 into 5, that is 25x, plus 5 into 2, that is 10y, is equal to 5 into 3, that is minus 50. We got new equation, and the number of new equation is 3. Now multiply equation second by 2, that is here is the coefficient 1, and 2 into 1 is 2x, plus 2 into 5, that is 10y, is equal to 2 into 4, that is 8. Now you will see that the coefficients of y are the same, that is 10y and 10y, but there is a sign of plus and plus. That's why you have to subtraction. You have to subtract equation third from 4 or 4 from third in this way. Now we will write here subtract equation 4 from third. By writing this, you will write these two equations one by one, below one by one. Now here equation 4 ये अपने को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इक्वेशन नंबर थर्ड से. तो पहले थर्ड लिखेंगे हम. 25x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 15. ये हुआ इक्वेशन थर्ड. और फोर्थ इक्वेशन 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 8. ये हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब सब्ट्रैक्ट, when you will subtract the equation, then at that time you have to change the signs. आपको ये जो साइन है
नीचे में इक्वेशन नंबर 4 के वो साइन चेंज करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तब, और जब ऐड करते हो तब चेंज करने की जरूरत है। दिस here is a plus, that's why it becomes minus. Here is also plus, that's why it becomes minus. And here is a plus, it also becomes minus. Now 25x minus 2x, that is 23x, and plus 10y and minus 10y get cancelled. Now 15 minus 15 and minus 28 is equal to minus 23. Then we have to calculate the value of x, that is x is equal to minus 23 divided by 23, and x is equal to 23. What is that? 23. That is minus 1. Here is a sign of minus, that one the value of x is equal to minus 1. Now we will put the value of x in equation 2. Here we will write, put the value of x, put the value of x in equation 2. इक्वेशन सेकंड में हमें वैल्यू ऑफ x रखना है। और क्या है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है -1। अब इक्वेशन सेकंड में रखना है, इसलिए राइट द इक्वेशन सेकंड x plus 5y is equal to 4. It is equation second, and we have to put the value of x in equation second, and the value of x is -1. Here -1 plus 5y is equal to 4. Now we have to find the value of y. Therefore this -1 becomes here +1. Therefore 5y is equal to 4 plus 1, and 5y is equal to 5, and y is equal to 5 by 5, and 5 ones are 5. Here 5 ones are 5, therefore y is equal to 1. Here we got the value of y, and you have to write the last answer, that is the solution of this equation. What will be the solution? The value of x is -1 and the value of y is 1. Therefore the solution will be -1, 1 is the solution of this equation. Here you have to write it is, or -1, 1 is the solution of this equation. Boys and girls, you will write this equation after understanding. If you can't understand, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ऑटोमेटिकली आपके समझ में आएगा। वेरी सिंपल मेथड है, और समझने में भी सिंपल है, और बहुत ही आसान एग्जांपल्स है। और जब आपको समझ में आए तब ये देखना बंद कीजिए। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखिए, और आपकी नोटबुक पर ट्राई कीजिए। इसको क्लोज कीजिए वीडियो को, और फिर बाद में इसको क्या कीजिए, अपने नोटबुक पर सॉल्व करके देखिए। अब हम जाते हैं अगले एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 6 है। Now boys and girls, we will continue the example number 6. You can write this example, and example number 6 is 1 by 3x plus y is equal to 10 by 3. Second example is 2x plus 1 by 4y is equal to 11 by 4. इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपका लिखना हो गया शायद, मैं इसको इरेज करता हूं। और एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर जा रहे हैं,
और एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखकर ही बच्चे घबराते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 है, तो आपको मल्टीप्लाई 3 अगर कर दिया इसको, देखिए, और 3 और 3 कैंसिल होता है। जैसे LHS को मल्टीप्लाई किया है उसी तरह RHS को भी मल्टीप्लाई करना है, और समझो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 3 और 3 गेट कैंसिल होता है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को अब देखिए, अब आप बोलेंगे अब किससे मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। देयरफॉर LHS को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 और 4 गेट कैंसिल। उसी तरह RHS को भी मल्टीप्लाई करना है और ये 4 और 4 गेट कैंसिल। इन दिस बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर हम लिखेंगे वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है देखिए, हियर 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, therefore 3 into in box or in bracket 1 by 3x plus y is equal to 10 by 3. It is equation first. एक फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को कितने से? बाय 4 से। Therefore 4 into 2x plus 1 by 4y is equal to 11 by 4. We have to multiply इक्वेशन सेकंड बाय 4। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है देखो, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, दैट इज हियर रिमेन x ओनली। नाउ हियर प्लस 3 into y दैट इज 3y इज इक्वल टू, अब यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 और 3 कैंसिल होता है। यहां पर क्या रहेगा? सिर्फ 10। इट इज ओनली 10 रिमेन हियर। सेकंड we got new equation now here. It is the first, it is second, and we got the new equation or the number of equation is third now here. ये तीसरा इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा? What will be the new equation? 4 into 2 that is 8x. These 4 and 4 get cancelled. Here it remain only y plus y is equal to a 4 और 4 a भी कैंसिल हुआ, क्या सिर्फ रिमेन है यहाँ पर 11। अब इक्वेशन नया है इसलिए हम इक्वेशन को नंबर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर y अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ का कोएफिशिएंट 3 है। अब x अगर एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है। We will eliminate the coefficient of y. Therefore, अगर y का अगर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, एलिमिनेट करना है, तो हमें इक्वेशन 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। करेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ देखिए 3 into 8 दैट इज 24x और ये प्लस 3 into y दैट इज 3y इज इक्वल टू 11 into 3 दैट इज 13। अभी और भी नया इक्वेशन मिला है और इक्वेशन नंबर कितना होगा? वो इक्वेशन नंबर 5। अब ये 4th इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 3y हो गया, ये 3y हो गया। अब दो कोएफिशिएंट दोनों ही y के कोएफिशिएंट सेम हो गए।
मगर यहाँ पर प्लस और प्लस है, इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 3 और 5 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5, देन वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। देखिए अब यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, शायद आप लोगों ने ये लिखा होगा, इसलिए मैं ये साइड में लिखता हूं थोड़ा सा। अब देखिए इक्वेशन कितना है 5, इससे हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 5 इक्वेशन लिखिए 24x plus 3y is equal to 33। ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। इसमें से कौन सा इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए 3, तो वो 3 इसके नीचे लिखिए, दैट इज x plus 3y is equal to 10। अब देखिए अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस, ये माइनस होगा और ए भी माइनस होगा और ए भी माइनस होगा, क्योंकि वो प्लस है इसलिए माइनस हुआ। अगर माइनस है तो क्या होता है, प्लस होता है। नाउ हियर 24x minus 1x, that is 23x plus 3y and minus 3y कैंसिल हुआ। अब क्या रिमेन है यहाँ पर, 33 में से 10 माइनस हो गया, रिमेन कितना है 23 ओनली। अब we have to find the value of x, that's why x is equal to 23 by 23। अब देखिए 23 1 जा 23, therefore x की वैल्यू मिल गई आपको 1। We got the value of x, that is 1। अब ये जो वैल्यू है x की, हम इसको 3 में लिखो, 4 में लिखो, 5 में सब्स्टिट्यूट करो, या 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। हम सब्स्टिट्यूट करते वक्त एक ख्याल रखते, थोड़ा सा सिंपल हो एग्जाम्पल, इसलिए हम एक चॉइस किया हमने। अगर 3 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो बॉयज एंड गर्ल्स पहले 3rd इक्वेशन लिखो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 3rd हुआ। अब इस इक्वेशन 3rd की हमें y की वैल्यू निकालना है, इसलिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। क्या वैल्यू है x की? x की वैल्यू है 1। Then we will write here 1 plus 3y is equal to 10। अब ये plus 1 becomes here minus 1। Now 3y is equal to 10 minus 1। Boys and girls, I can erase this part for continue this। ये एग्जाम्पल जो लिखा है उसको मैं इरेज करता हूं, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है तो यहां पर लिखता हूं। देखिए क्या है यहाँ पर, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। अब वैल्यू ऑफ y, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, therefore y is equal to 9 by 3। now y is equal to 3 1 is 3 and 3 3 is 9, therefore it becomes 3। अब y की भी वैल्यू मिल गई हमें, we have got the value of y and the value of x। what is the value of x here? the value of x is 1 and the value of y is 3, therefore 1 comma 3, that is 1 comma 3 is the solution, is the solution। अब यहां तक का जो कंटिन्यू हुआ है इसको कंटिन्यू देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो देखिए। और हम
आज के इस वीडियो को ब्रेक देते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में। ओके, थैंक यू।